महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो आपको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल इस समय अनुसार अपन ने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो। क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना, वो तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश कहा जाता है। मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है, वो बदलता है। और ये
वो तो होता नहीं, इसलिए अपने मन सा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपलक सदा मीठा मधुरता अर्थात मान, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी के सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते, ये तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता मानता श्रेष्ठ भावना चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते, और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो, आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की वृद्धि और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, महक रहा है मधुबन तुमसे।
शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है सदा सफलता मूर्त अव्यक्ति शारी। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेंगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। दिलाराम भट्टी का अभ्यास का पॉइंट रहेगा प्रेम का सागर। प्रेम दुख की आदत को तोड़ देता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। शिव बाबा तो प्रेम के सागर है ही, परंतु हमारा ब्रह्मा बाबा भी प्रेम के प्यार का सागर था। और ब्रह्मा बाबा का जो प्यार था, जिसमें बाबा ने हमारी जीवन में सफलता भी हो, विजय भी हो, नियमों पर भी चलें, संयम भी पूरा हो, तो बाबा ने कई तरह से, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर लव है तो केयर है। नहीं, आप उस व्यक्ति का ध्यान कर मतलब संभाल करते हैं, उसकी जो सहयोग है उसको देते हैं। पर फिर बाबा ये भी नहीं चाहता था कि बच्चे आधारित रहें किसी बात पर। तो मैंने कई बातें याद आती हैं कि एक तरफ तो बाबा ने जो भी ब्रह्मा भोजन, हर तरह का सब कुछ यज्ञ में बनता था। पर फिर बाबा ने 1 महीने के लिए बोला कि हर एक बोर्ड पर लिखेगा कितनी रोटी खानी है। तो बाबा मिसाल देते थे कि जिस दिन सब्जी अच्छी लगती है तो ज़्यादा रोटियाँ खा लेते हैं, और जिस दिन नहीं होती है तो बहुत रोटियाँ बच जाती हैं। तो हर एक लिखे, ये नहीं पूछे कि आज क्या बना है। नहीं, तो एक तरफ तो बाबा बहुत प्रेम से बहुत कुछ बनता था, ब्रह्मा भोजन, टोली, और दूसरी तरफ संयम भी रहे। तो ऐसे बाबा ने हर कर्म इंद्री का स्वराज्य अधिकारी बने, मतलब कि कोई भी कर्म इंद्री वश सब कर्म नहीं करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंधन हो जाता है, कोई भी कर्म इंद्री। तो इसलिए बाबा ने कई तरह के ऐसे प्रोग्राम बनाए। एक बार बाबा ने कहा कि सबको ज्वार की रोटी और छाछ मिलेगा। तो कई ऐसे थे जो बड़े बड़े घरों से आई थी, उन्होंने कभी भी गेहूं के अलावा कुछ खाया नहीं था। तो कईयों को ये संकल्प चला कि हमको हजम होगी नहीं होगी, और कईयों ने कहा बाबा ने प्रोग्राम दिया, हम खाएंगे। तो जो बहुत नाजुक थे, कई बुजुर्ग, उन्होंने बस, बाबा ने कहा है ना हमको यही खाना है, और जिनको संकल्प चलते थे वो सब बीमार हो जाते थे। तो किस तरह से बाबा ये चाहते थे कि हर एक बाबा का बच्चा सफल रहे। फिर दूसरी बात बाबा हमेशा कहते थे कि जो तूफान आपको आते हैं, जो परीक्षाएं आपको आती हैं, वो पहले बाबा को आती हैं। क्योंकि बाबा को जब आती हैं
और बाबा उनको पार पार करते हैं तो आप लोगों को अनुभव सुनाते हैं कि बच्चे ये करो, ये अवज्ञा मत करो, क्योंकि बाबा का अपना अनुभव है। तो मुझे वो बहुत बात याद आ रही थी कि सभी कोई जो भी हमारे सामने बात आती है उसमें हमको सफलता विजयी बन करके फिर हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो जब आती है कोई भी बात तो घबराना नहीं है, अनुभव कराने के लिए आती है। एक बार मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि इतना संघर्ष क्यों होता है, ज्ञान में तो हम शांति के लिए आते हैं पर घर में ही अशांति हो जाती है। तो बाबा ने कहा अनुभव कराने के लिए। उसके बाद मुझे ब्रह्मा बाबा का भी फिर याद आया कि बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे जैसे कमांडर होता है उसको युद्ध में आगे रहना पड़ता है ना, फिर बाद में और सिपाही होते हैं। तो इसलिए हर एक बाबा का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यही याद रखना चाहिए कि अगर मेरे पास बात आई और मैंने सफलता से उसको पार किया तो दूसरे के सामने जब आएगी तो भाई ऐसा करो। जैसे कोई किसको बीमारी होती है, कोई दवाई से ठीक होती है तो वो सबको कहता है भाई ये दवा करो, इस तरह का इलाज करो, कई बातें अपने अनुभव से कहते हैं। तो इसलिए बाबा की जो इच्छा है हम बच्चों के प्रति, कोई भी बंधन न रहे, कर्मातीत बने, सदा सफलता मूरत हो। और सफलता में बाबा विजयी भी कह रहा है कि कभी मन से हारो नहीं। कभी निराश हो जाते हैं, कभी तंग हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी कैसा होगा क्या होगा उन संकल्पों में चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सफलता मूरत बनो। जब तक कर्म इंद्रियों का बंधन है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध हो। बंधन जैसे कि एक मजबूरी से कुछ कराता है हमसे, हम नहीं चाहते हैं, वो सोच चल जाता है। तो ये जो सोच चल जाता है ना व्यर्थ, ये भी तो बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है एक्चुअली। क्योंकि मन ही के संकल्प तो हमारी जीवन का आधार है। संकल्प से फिर बोल होता है, बोल से फिर कर्म होता है, कर्म का बीज तो संकल्प है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संबंध बेशक हो लेकिन बंधन ना हो। मन को खिंचाव हो, बुद्धि को हो, कभी समय, कभी धन, कईयों का धन भी कर्म बंधन में चला जाता है ना। कई बार विश्वास रख के धन देते हैं फिर नहीं मिलता है वापस, राइट, तो वो बंधन है ना। तो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा, कर्म का बोझ भी नहीं, तो मुक्त है, तो सदा ही क्या बाबा ने कहा, सफलता ही ज्यादा है और कर्म का बंधन भी नहीं, तो मुक्त है, वो सदा ही सफलता मूर्त है। थोड़ा करते हैं बहुत प्राप्ति होती है। जितना हम धन से करते हैं, भावना से करते हैं, उतनी बरकत पड़ती जाती है। तो इसलिए जी बंधन से कुछ नहीं करो, स्वार्थ, एक स्वार्थ भी बंधन हो जाता है कि बस मेरे लिए ठीक है, मेरे पास है, मैं तो ठीक हूँ। परंतु सब ठीक रहने चाहिए ना, हम सभी, हर एक ठीक होगा तो सफलता और खुशी का वातावरण रहता है। अगर एक भी थोड़ा निराश होता है तो वातावरण में प्रभाव तो पड़ता है।
तो इसलिए सभी हर एक ये सोचे कि ये सहयोग देना है ईश्वरी परिवार में कि हम सदा बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त रहें और सफलता मूर्त रहें। तो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त आत्मा सदा, बाबा कहते हैं फलक से कहती है कि विजय तो निश्चित है, विजय तो निश्चित है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कौन से दो संकल्प याद रखो? विजय तो निश्चित है, निश्चित है। अभी तक तो हमने देखा है कि यज्ञ का जो भी कार्य होता है कितने भी विघ्न आते हैं, लेकिन विजय तो होती है। मैंने दो बातें बहुत याद आती हैं जो वर्तमान समय की परिस्थिति अनुसार जरूरत है। जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को यूज करो, उससे जो परिवर्तन हुआ ना, ब्रह्मा बाबा यही करते थे ना। चलो आज कई तरह की सर्विस करते हैं, कोर्स कराते हैं, ब्रह्मा बाबा तो बस साइलेंस और योग बल, साइलेंस की शक्ति से निर्विघ्न हो जाएंगे। जो भी विघ्न आए ना, एकदम साइलेंस में, ऐसे सकाश भी देना होता है तो साइलेंस तो चाहिए। और बाबा साइलेंस को कहते थे टावर, जैसे ऊपर चले जाओ। तभी ब्रह्मा बाबा के लिए जब उनका स्मारक बनाना था तो टावर ऑफ पीस बनाया, टावर, क्योंकि बाबा उस स्वरूप में बैठ करके यज्ञ का सारा कारोबार ठीक रहे, कोई भी विघ्न पड़ते हैं, बाबा साइलेंस में बैठ जाते थे अपने कमरे में। कोई भी बहनों के ऊपर भी अगर कभी कोई आपदा आती थी तो बाबा उनको साइलेंस पे प्रकाश देके बाबा के संकल्प उन तक पहुंच जाते थे, जैसे उनको बाबा डायरेक्शन दे रहा है सूक्ष्म में। तो साइलेंस एक ऐसी भाषा है जिसकी वाइब्रेशंस बोल से बहुत दूर पहुंचती है। बोल तो कितने तक पहुंचेगा, पर साइलेंस तो सारे वातावरण में फैलती है। तो इसलिए बहुत ध्यान में आता है अभी कि ब्रह्मा बाबा ने साइलेंस के द्वारा विघ्नों को कैसे पार किया और कराया। कराया भी, कुछ विघ्न यज्ञ में आते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं। तो व्यक्तिगत जो विघ्न है उसके लिए भी बस साइलेंस में बैठो। ठीक है, बाबा को याद करते हैं, मदद चाहिए, पर साइलेंस में रहने से भी बाबा उपस्थित होते हैं। और सभी आत्माओं तक जब वो वाइब्रेशन पहुंचती है, बहुत सारी होने वाली बातें एकदम जैसे आती ही नहीं है। बाबा के ये महावाक्य तो हमें याद रहते हैं बच्चे, या बात मन में होगी या बाप मन में होगा। तो मैं तो कोई भी बात चलती है, मैंने कहा भी बाबा भूल गया ना, बाप को याद करो, बात को क्यों याद करते हो। पर कभी चलो मन चला भी जाता है तो उसको उसी समय परिवर्तन में लाके बोलो कि मुझे बात को खत्म कर, बाप को अपने मन में, और फिर देखो, अनुभव करो कि बाबा कैसे उस बात को आपको पार करवा देता है। वही सफलता हो गई ना, पार हो गए, पास विथ ऑनर हो गए। वही हमारी सफलता है कि जो भी बात आए उसका असर नहीं हो हमारे ऊपर, लेप शेप नहीं लगे। तो बाबा भी साथ रहेगा, अनुभव भी बाबा का रहेगा, पर बात मन में है।
तो बाबा की समीपता नहीं महसूस होगी। तो इसलिए नहीं, बाबा एक वर्ड बताते हैं, पास, पास विथ ऑनर, बाबा के पास रहो। जो पास हो गया, बीत गया, उसको भूलते जाओ। तो बाबा के हमें पास रहना है, समीप रहना है। अभी तो समय ही ऐसा है, चाहे वो आत्माओं की वाइब्रेशंस, समस्याओं की जीवन, दुख की कहानियां, चाहे विश्व भर में देखो तो कितनी डर है, अशांति है, हथियारों की तैयारी है। तो वातावरण तो बहुत ही नाजुक कहो, डर वाला कहो। तो इसलिए बस सदा बाबा की याद से मैं विजयी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए अभी हम, मैं सफलता मूर्त हूँ और प्रेम के सागर में मुझे लीन रहना है। तो अभी हम बैठेंगे इन दोनों संकल्प का अनुभव करने के लिए। ओम शांति।
बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्त वाणी, तारीख है 5 मई 1977। वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के संस्कार स्वभाव को न देखो, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी न सुनने की आदत होंगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है, जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है। सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थक ना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे, सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया, तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्ट मोह हो गए। अच्छा, आगे की मूली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए। ओ मधुबन वाले बाबा। तो शिवरात्रि का अर्थ तो बेचारे समझते ही नहीं है। तुम समझते हो तो और के ऊपर तरस पड़ता है। बेचारे कुछ नहीं समझते हैं। भला क्यों नहीं कुछ भी नहीं समझते हैं? क्योंकि यह है ही भक्ति मार्ग में है। ज्ञान को जरा भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान है नई बात है। नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू। तो एवरीथिंग न्यू नई दुनिया के लिए बाप आते हैं, जो नई दुनिया के मालिक बनते हैं, उनको बैठ करके सिखलाते हैं, समझाते हैं। और तो कोई जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्यूटली नई बात है। बाप समझा कि वो है भक्ति और ये ज्ञान है।
तो विचार करो सारी दुनिया में यह भक्ति है, बाकी तुम मुट्ठ भरे हो जिनको बाबा ज्ञान देते जा रहे हैं और वो विधि को पाते रहते हैं। पर तुम भक्ति तो बहुत बड़ी है ना बच्ची, सारा झाड़ है जैसा एक तरफ में, अब बाकी तुम कितने हो थोड़े, तो इसलिए वो बेचारे इतना समझ नहीं सकते हैं। अब आपने समझाया है कि बच्चों जो उन्होंने कल पहले समझाया वही समझेंगे, इसके लिए तुम लोग फिक्र मत करो। कलाक कलाक भी तो मेहनत करेंगे तो भी नहीं समझेंगे। तुम लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुतों से मेहनत किया है और उसके बाद मुश्किल से पैर टिके हैं। नई दुनिया पर पैर धरना है बच्चे तो टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? माया पैर उखा देती है झट। लड़ाई का मैदान है नहीं बच्चे। प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्हीं भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया। Om Shanti. In this Avyakt month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. Constantly embodiments of success. For as long as you have the support of your physical organs, you definitely have to perform actions. However, let there be no bondage of karma, but a relationship of karma. The stage of liberation in life means you experience greater success and no burden of those actions. Those who are liberated are constantly embodiments of success. A soul who is liberated in life will say with spiritual intoxication, victory is guaranteed and success is my birthright. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 15. In this Avyakt month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. Today's topic: constantly embodiments of success. Dilaram Bhatti, point for practice. The ocean of love, Prem Sagar. Prem ke Sagar. Love breaks the familiarity of suffering. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. In month of January, everyone's attention, love,
relationship with Brahma Baba, our mind and intellect really want to absorb that. The pictures you saw, and as much we know, that Baba's timetable of the day had all different kind of activities. Some of the actions look very ordinary, but Baba was always part of it. It's necessary to do karma yoga, but also while doing karma yoga, our spiritual journey continues also. They have to be combined because involving in everything, like Baba will, you saw him doing gardening, and gardening is really very good. I myself used to always water the grass or go near the flowers, and gardening is something which kind of you are nurturing, and having good relationship with nature, with earth. So then you saw anywhere, Baba will take interest in uh, pieces of toli. Once Baba was giving toli, and some pieces were very small, some big. And Baba told Didi, no, it shouldn't be like that. So since then, even now when you go to Madhuban, the tolis are really cut into proper size and everything. Once Dadi Janki was saying that they had to cook sweet rice, right? And they have to keep cooking, but taste was same of every pot. So that means the way Baba has set up system, whether for kitchen, whether for toli, whether for those who are cooking, and so definitely love was there, but also a lot of attention on karma yoga. I remember that these days we have departments, but when you had to do all around, then you learn everything, you participate in anything, everything. So whenever I look at pictures of Brahma Baba, it's like he's doing some action. So doing action is not a bondage. It's necessary because if you don't do, then others observe you and they will say, but why should I do? If you want to be a good example, you have to be all round. You have to take interest, participate, and it's a kind of cooperation with everyone. If we are together in family and only one person cook, which we had Boli Dadi, but then we also went, helped in making Brahma Bhojan or whatever it is, Karma Yoga is sustaining the yajna. Before the groups used to go, every day we had been given one Karma Yoga. Whether it is making toli, Brahma Bhojan, cleaning the grains, making bedding, pillows. I still remember we made so many. I even know until now how to make a mattress in India. No, they give you a very big cotton mattress and then you have to stitch it, right? It's a very big needle and then you stitch and you can stitch it properly. So Baba, he was karma yogi. We also have to be karma yogi, but also spiritual journey. Brahma Baba accumulated all the powers. Of course, he had power of love, power of knowledge, but also power of be a good example is important. There are some, they don't do anything for themselves even, right? And Baba said, no, you should do everything. So I like Baba's life of a Kanu yogi, plus on a good spiritual journey. Whenever, whichever power is required,
Baba has lot of patience. Baba had lot of tolerance. Baba has lot of love. Was detached observer, but will give Sakash all the time. So, month of Brahma Baba, because every simrti or awareness brings power. So, always keep thinking about how Baba did it, what we have to do. So, don't get confused, and there are different opinions, different interpretations of Murli. But we have to listen to Baba very carefully and always remind yourself of what Dadis also did. They also followed Brahma Baba to take care of Yagya. Even if we are organization, but we are Yagya. So these days there are many different interpretation theories, but we have to remain on the main path, right? So Baba is saying that constantly embodiment of success, constantly embodiment of success. So keep reminding yourself, I am a victorious soul, success is my birthright. For it, Baba says, as long as you can, the support of your physical body, as long as you have the support of your physical body, you definitely have to perform actions. However, let there be the bondage. Let no bondage of karma. Perform action, but no bondage of karma. Baba says, but the relationship of karma. Because if there is body and you use all the sense organs, bodily organs, to do seva for yajna, it's not only purification, but it's also earning fortune. So relationship of karma, the stage of liberation in life, means that you experience greater success and no burden of those actions. The stage of the liberation in life means, Jivan Mukti means, you experience greater success and no burden of those karmas. So Baba says those who are liberated are constantly embodiment of success. Those who are liberated are constantly embodiment of success. So Baba says that a soul is so interesting that bondages brings burden and obstacles in our success. So Baba says that one who is liberated in life will say with spiritual intoxication, victory guaranteed and success is my birthright. Victory is guaranteed and success is my birthright. So I think we also, and especially in month of January, just follow Brahma Baba, karmateet stage, Jivan Mukti stage, and just check whether no bondage pulls us, whether in thoughts or in actions.
as much with love you will do yajna seva, that much power, charity, blessings will be upon us, and that will be our victory and success. So victory is guaranteed and success is my birthright. So contemplate, reflect, and make month of January a very, very useful and also inspiring month. Om Shanti. Om Shanti Didi, Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti Gayatri Ma'am. In preparation for 18 January, I always think that I am the child of Angel Brahma. Because when I took spiritual birth, Baba had moved or transcended from Sakar to Avyakt. And so, especially at this time of the year, I see Baba the angel becomes predominant in the way I look at him, in the way I talk to him, in the way I remember him. And so I want to engage you not so much on the Avyakti point for tomorrow, but on Brahma Baba being the angel this evening. Someone sent me a book called The Angels of New York. And I didn't know New York had so many angels. But it's a meditative journey on their journey in the city. And they identified the angels that are here in the city, the angel of protection, the angel of travel, the angel of romance, the angel, different angels, the human angel. And so I thought how appropriate, because this is the time we are also talking about angels, and even in a city like New York, they have angels and they have a book on the angels. But what I want to ask you is that I know that there was a time in the yajna, and I hope you could remember this time, when Sakar Baba used to ask trans messengers to go to the Abhyakt region and tell him, describe to him what subtle Brahma was like. And he used to then take what was brought back to him and look at himself with it. What I find so fascinating about that, today we have Brahma Baba to look at, we have the ancestor souls to look at in the way they transcended and became an angel, but Brahma Baba had no one to look at for his transcending to be an angel. He had the subtle Brahma, I suppose, to look at, and that's why he was so fascinated to know what was the difference, what was the similarities, etc. So if I remember, you were one of those trans messengers that Baba used to say, go to the subtle region and come back and tell me about that subtle Brahma so that I too can become like that. I suppose that's what he was thinking. He wouldn't have said that to you, but I thought that's what he was thinking. So were you one of those trans messengers that Baba asked to do that? And what was it that you saw and what was it that you said to Baba? Mhm. There are many stages of trance. The first stage is where you only have visions, like you seeing Krishna, you seeing heaven, or you seeing something. And a time come, then you take message and give to Baba.
The third stage comes when you bring back message also. So these are 3 stages in trance. And when Baba came to know that I also kind of have started going in trance and have the visions, then Baba invited me to come at 4 o'clock in his room and made me sit on his bed on the side of the wall. And Baba will give me drishti, and Baba will, and he will make Santri Dadi also sit there on the mattress. She always used to sit there. So then Baba said, in subtle regions, there is perfect angelic form of Brahma. So can you go and see what is the difference? I was new, I was innocent, so whatever I saw. And one thing which I still remember was that light was brighter and eyes has like more twinkle and more light. So I came back and I told Baba that light was more, and Baba smiled. And because at that time also Baba had many, many years already, right? When I came in knowledge, Baba was like started his journey in 1936, 37. So when I came 58, and so it's like so many years he was already on journey. And his thoughts about perfection, fullness, I don't know, there was not that much talk about angelic stage, but definitely one of that qualification of 16 degrees, 16 celestial degrees, viceless, all virtuous. We say these are Sri Krishna's qualities or degree. So that definitely was the aim in everyone's mind. And after so many years of journey, definitely Baba was looking for final destination or final goal or aim of the life. And that's where I think he was trying to see what is the resemblance, what is the different. And so many asked me that was it same features, was it? Yeah, because it was Brahma, but awake Brahma, no light, with the light. So yeah, I definitely at that time, that's what I remember I did. And when Baba would be in Sakar and you would go into trance and bring him messages, those messages would be from Abhyak Bapdada, in the sense it would be Shiv Baba talking to you through the light form of Brahma, of angelic Brahma. And then you used to bring the message to Sakar Baba? Actually, there was personal trance messenger was Santri Dadi. And there was another one, her name was actually Sandeshi. That means she will always go. But Santri Dadi, like if he has to travel, not travel, all directions will come about Yagya from Santri Dadi. Later on, of course, when my part, Dadi Gulzar was also one of the main trans messenger at that time. And then some of us gradually grew, and then we were also given messages. But it was mostly Dadi Gulzar and Santri Dadi, especially for Yagya, for Baba's personal life. I think they too were the proper trans messengers. But you still went into trance, even though you weren't the official one. But how did you communicate with Shiv Baba in the subtle region? Was it through the body of subtle Brahma? Yeah. It was when we say Bab Dada. So it was Avyakt Brahma. Like later on, when Baba became Avyakt, then we have Avyakt Bab Dada coming in Dadi Gulzar, right? So before was also subtle Brahma. And Shiv Baba through subtle Brahma. Because otherwise Shiv Baba cannot talk to us, right? That's right. So
For communication, it has to be Brahma. And that is where I also want to say to the family that the importance of Brahma's role in our lives, because without his surrender, without his, giving the loan of his body and totally obedient to Baba, following Srimad, there are so many things which are the foundation of Yajna. Even dadis were there, and even now there are many instruments or teachers who are good example also. But without Brahma Baba, one time Baba said, if Shiv Baba comes, he has to come in a body and then speak morally. So if we don't have that full love, total respect and obedience and aim of following Brahma Baba and keeping to those traditions which he began, I think that month of January is to kind of reinforce them in our life of how much love we and how much respect and how thankful we are to Brahma Baba for everything in our lives. What would you say is the easiest way to connect to angelic Bapdada, to Baba through angelic Brahma Baba? Because we are all aspiring now, particularly those in the West, they may not identify with the goddesses, but they definitely identify with angels. And of course, we know Baba's, you talk about the power of being an example. That was one of the outstanding powers in Baba's life. How would those who have not met Sakar Baba, who have not met Avyakt Bapdada through Dadi Gulzar, what would you say to them that would be the easiest way to connect to Angel Brahma now? If you say surrender, they may say, oh, that's difficult. If you say obedience, they will say, well, we're too independent, we can't be obedient. So what's the easiest way? And I'll tell you what I shared with the Dilaram today. I said, what if we go into Baba's room and suddenly Baba's presence there became very living, and he's an angel, and I can see him as an angel, really, really in a living form. What would be my response to that? And so that for me would be an easy way. What would you say would be an easy way for them to relate to Angel Brahma? There are two things. One is in soul consciousness, you connect with Shiv Baba, and in your angelic stage or when you are, in a subtle form, then you connect with, I call him my guardian angel. And so then you feel that kind of relationship, you feel connection. But in soul consciousness, Shiv Baba, and in our subtle, because when we meditate or do yoga, kind of intellect becomes very subtle and the mind. And then we use those mind and intellect to connect and create relationship with Brahma Baba, which I think everyone can do if we pay attention to emerging into our subtle form, or mind and intellect very subtle, because mind and intellect is very connect with vyakt, with gross, with physical. But as soon as we go beyond, there is experience of angelic stage, and then from that stage you connect with Brahma Baba. They can, if everyone tries, they can definitely experience. So the first step would be, I'm a soul, I'm a bodiless being, I connect to Shiv Baba. And the second step would be, I am not in a body of flesh and bones, but I'm in a body of light in the subtle region.
and I'm connecting to Angel Brahma, but I'm connecting to Angel Brahma's heart. Right? So I begin to feel it. Otherwise, I will start visualizing and I will start thinking about it. And it will remain like thoughts in me. So the question is to sustain that angelic form of light, do I do it through feelings or do I do it through thoughts to I sustain think, my body of light? yeah, I think thoughts have to change into feelings, and feelings create thought. And yeah, this is how it happens. And I think as we all also have this awareness that we have to be angelic, that means we have to be subtle. So I think that becoming aware gradually, not get caught up into the grossness and physical and mundane things lot, and keep lot of energy, mind and intellect goes towards very unnecessary things. So I think that if we keep that attention, that we have to be in our angelic form and do what angels would do, service in a subtle way. Mm. And that is why during day, at least few times we should do little bit of mansa seva, bodiless stage or silence, But mostly we are busy in service, doing actions, but going beyond that also. So not only others will follow, but the atmosphere also will be very, very powerful, very loving, very sweet. Mhm. You were in Madhuban on the 21st when Baba first came. Uh, he was sending messages, but he didn't come to talk. When Brahma Baba came the first time in Dadi's body, how did you feel? Mm. Yeah, actually, we took it like Dadiji was there, and when we got message, we were kind of well in silence, and there was no sorrow. We felt we will be more responsible for the family. But when Baba came and we start getting drishti, suddenly, like at least I remember myself, all of us, those who were sitting in front, got very emotional for a few moments. Nirmal Shanta Dadi came and sat on Gadi and said, "No, Baba doesn't like this." Even we didn't have tears, but you could hear like we were little bit emotional. And she didn't ever had tears or cried, or because she said, no, this is not what Baba likes. This is not what he has taught. Just two sentences she said. So we were very emotional, and the feelings which emerged. But then, as that Murli of first Murli, we read it again. It's so clear in directions that everyone became very light and start feeling that Baba is still with us because he is giving Srimad for everything. Mm. Do you think that because in that first Murli, it was definitely more of Shiv Baba's voice, kind of saying, well, it's drama, it happened, da da da. Do you think Brahma Baba would have also been a little emotional? Or Mhm. do you think he was totally detached, watching all the children because he was in his complete state? I think that, Baba, even in Sakar, when we are leaving, he had a lot of love for us. And we could see it. As they say that tears were in the eyes, but they don't fall, in the sense of, so we could feel that even when I know we used to take leave, Baba, we going and we will come back. And because he loved us, plus he wanted us to be there, but he also knew we have some service responsibilities. So we need to go. And that is where I think it was Ramesh Bhai who said to Baba, please don't forget me. Baba said,
that if I remember you, how will I remember Shiv Baba? But that is where it came known that no, I won't remember, but I won't forget you also. So I think that definitely Baba also had lot of feelings for each one of us, lot. And like he knew what part we will play, and he gave accordingly. Well, to be continued, because it is so amazing these days that you feel every day, you feel his presence more and more in a living way at the centers, in the Baba's room. And so I look forward to hearing more stories about when Baba became Avyakt and the power with which the power of his example, as you said tonight. And that example is still the one we follow in the footsteps of him. And so I look forward to hearing more about it. Okay, thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. So tomorrow is Thursday in our schedule from Amritvela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. and we'll continue with the Patti in the evening 5 to 6 p.m. English Sakar Muli. Together with that, in breakout room Avyakti Children Muli class, we'll continue with the Patti and then Hindi series. We will have Bhog offering. After that, Mohini Didi will be offering Bhog. Anyone who would like to offer Bhog, you can send your name on our WhatsApp 516-717-9171. Then English series and chit chat. Now let's remember Baba and take drishti from Didi. Just one note for everyone that on 18th of January, it's Sunday, so Mohini Didi will be offering Bhog after Bapdada's transmission in Harmony House. So Vyakti Parivar will join together, and also we will offer Bhog in the evening in a Vyakti Parivar. So there will be 2 Bhog in the morning and evening. Both will be offered by Mohini Didi. Anyone who would like to offer Bhog on 18th of January, they can also send your name. Okay, now let's remember Baba and take drishti from Didi. दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
का यही कथन है। ओम शांति, ओम शांति। Mm.